रसभरी बेसिकली मर्दों की फैंटेसी है. The name only sounds like blue film. I think that Anubhav sir and Anurag are two of the most distinctive voices in Hindi cinema today amongst the makers. जिस चीज के लिए सोनम, आलिया, सोनाक्षी को 1 या 2 साल लगेंगे, जिस मकाम पे पहुंचने के लिए स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी को 10 साल लग जाएंगे. Swara, welcome on Bollywood Hungama. Hello, कैसे हैं आप? Very well, very well. So, Rasbari is creating a lot of sensation right now. Tell us what are the numbers like? Because you know these are times of OTT, so we still don't know that how one gauges the success or popularity of any show, any film on OTT. Yeah, absolutely. And actually, this is a conversation I've been trying to have with Amazon also. बताओ ना, हमें भी थोड़ा बताओ कैसा चल रहा है. But obviously, they have not revealed the exact numbers, but they did say that the views are actually very good and the views are steadily rising, which of course I can also make out in terms of the kind of messages I'm getting, that more and more people are watching the show now. And I think it's doing really well. It's doing very, very well. And there's a lot of buzz around it. There's a lot of talk around it, for which of course मुझे अपने मेरे जो इतने शिद्दत भरे ट्रोल्स हैं, जो बिल्कुल मेरी कब्र तक जाएंगे मेरे साथ, उन्होंने इतना बोल के रसभरी के चर्चे पूरे, जिसे कहते हैं ना, शहर में फैला दिए हैं. तो अब अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, there is no way of avoiding रसभरी, or कि रसभरी आ रही है. And actually one of the directors of Bollywood said a very interesting thing to me. He said, Swara, the day your show released, 4 other things released, but Rasbhari is the only thing that's being talked about. So I think that all in all, it's great. And of course, there's been criticism, there's been controversy, there's also been lots of praise. So I think बड़ा wholesome, रस से भरा हुआ reaction आया है हमें. हर रस है उसमें. Right. So let's take various aspects. So you're being compared with Madhuri Dixit in terms of the way you're looking like, and you find that quite a bit. I find that impossible. I have to say I'm a Madhuri Ji fan, and there can be nobody else like Madhuri Dixit. It's as simple as that. So then I mean, I'm honored. I'm of course beyond happy. But Madhuri jaisi koi nahi, aise kehte hain na. So that's I'm not even considering that. Okay. So in a way, you are saying that there are two sides to Rasbhari, but I would say that maybe there are 3. Like how? Maybe there are 3, because if you watch till the end, so you do get another side. Yeah, don't give it away, Faridun ji. As well. No, I'm not giving it away. I'm just saying. So my question to you is that how crucial is it to just work on the body language? Because body language in all the 3 versions, I think it is completely different from each other. Yeah, absolutely. Actually, mere liye Rasbhari, when I read the script and the whole script, it was obviously a risky project even for me, because I was like, wow, I've never done something like this in my life, and it's very it's set up as a very risque, bold content. The show is also playing on that. वो आपको tantalize करने की कोशिश कर रही है कि ओहो आओ देखो. And of course, show is not just that. वो जब पूरा show आप देखेंगे तो वो आपको समझ में आएगा. But for me, yeah, very important. I've never done 2 different people in one. It's almost like a double role, right? So I was very actually nervous. And for Shanu, I thought that the way to do it is to think of certain very central character traits that will define the body of these people. So for Shanu, she's very upright, she's very straightforward, and she's very सटीक, जिसे कहते हैं ना हिंदी में. तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत, जबकि उसने ब्लाउज पहना है स्लीवलेस और बैकलेस और वो सब है, उसका वो अपना एक सेक्सीनेस है, बट एक्चुअली द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज वेरी प्रॉपर. एंड व्हेन यू सी शानू, यू इवेंचुअली, जो नंद के साथ भी होता है शो में, वो रिस्पेक्ट आती है आपके मन में, बिकॉज वो क्लियरली दिख रहा है कि यार वो औरत वो अपने काम में इंटरेस्टेड है. शी इज वेरी वेरी she's not interested in all this beauty, sexuality. While she knows she's beautiful and she she carries herself very well, but she's actually very focused on her work. She's a good teacher. She's a passionate teacher. She enjoys it. With her husband, I thought of so with Shanu, I thought actually of like teacher ka scale nahi hota ki straight ekdam. So I wanted to bring that in my body.
when she's with her husband, I thought that let's show the softer side. So it's like a creeper, you know, वो हल्का सा ऐसे लहराने वाली फील, तो वो सॉफ्टनेस आपको उसकी बॉडी में दिखती है. रसभरी वाज अ रियल चैलेंज बिकॉज आई वाज लाइक हे भगवान ये क्या है ये. सो मैंने सोचा कि रसभरी के लिए, मैंने कहा क्या है रसभरी. रसभरी बेसिकली मर्दों की फैंटेसी है. एक तो नाम ओनली साउंड्स लाइक ब्लू फिल्म. सो आई वाज लाइक बेसिकली हर प्रेजुडिस, हर स्टीरियोटाइप, हर पूर्वाग्रह, हर वो टिपिकल जो हमारे मन में इमेज आता है तवायफ जब हम सोचते हैं, नॉट जस्ट तवायफ, आई मीन शी इज नॉट लाइक अ मीना कुमारी तवायफ, यू नो, ये थोड़ी लो लेवल की तवायफ है ये. तो वो एक थोड़ी क्रैसनेस है उसमें, थोड़ी सड़क टाइप वाइब है उसके अंदर. तो मैंने सोचा कि, और एक वो जिस्म की भूख वाला जो पूरा एंगल है उसका, तो मैंने सोचा कि जब हम ये सारे टर्म सोचते हैं तो हमारे मन में किस किस्म की शख्सियत आती है. तो वो बहुत ही यू नो लाइक ओहो आहें भरना और वो डीप साइज और वो ऑफ कोर्स कपड़े वपड़े कॉस्ट्यूम. आई एम सेइंग अपार्ट फ्रॉम दैट द बॉडी लैंग्वेज ओनली इज फुल ऑफ, इट्स लाइक ड्रिपिंग सेक्स. तो वो यू नो व्हेन शी सेज दैट हर फर्स्ट रसभरी का रिवील इज लाइक व्हेन शी सेज कि आओ मालिक आओ. तो वो आओ मालिक आओ में ही आपको समझ में आ गया कि आओ और क्या होने वाला है, राइट. सो आई जस्ट थॉट दैट let me make her a caricature, let me make her a stereotype, let me make her stylization, because she's not real in that sense. Rasbhari is a figment of that society's imagination. She's a figment of Nan's imagination. She's a figment of the husband's imagination, and she's a figment of Shanu's imagination as well, and she's a figment of the wife's imaginations. So in Rasbhari, I was like, we don't need to be realistic, we can actually play the stereotype. And of course all that and all, and my thing was कि यार इस character में ना हम sex, इस शो में सेक्स का एक भी सीन नहीं है. There's no nudity except there's a backless shot, but there's no nudity. So I thought that every time Rasbhari is on screen, it should just be like sex, 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 because she is basically a product of a 16-year-old adolescent hormonal boy's fantasy. And then, but yet, because I didn't want her to just be that, because that's also boring and it's very one-sided, I gave her a naughtiness to her. You know, that Rasbhari is actually, वो थोड़ी सी ब्रैटी है, उसके अंदर एक शरारत है ना, जहाँ पे आप उसका बाबा के साथ जो एक सीन देखते हैं, जहाँ पे आप वो नंद को जो पकड़ती है और वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है, वो जो सीन हम देखते हैं, उसमें एक शरारत भी है. जब वो अपने पति को कहती है कि भाई कौन है सानू, तो उसके अंदर एक you know there's a funniness to her. So I wanted to give her a little bit of a personality as well. Or so yeah, that's basically what it was with the whole show. And of course in the end, the mystery person, that I was just like, you know, just play something totally different, you know, like the language should be different, the body language should be different, the look should be different, the clothes should be completely different from anything you've seen in the show. So that was just the idea. Right. Okay. And there's a lot of mystery in what she does in her entire personality, and the fact that one wonders that maybe it is all innocence, and maybe there are some medical reasons, and also but there is a mystery going right through, and yeah, that's pretty interesting actually. Yeah, actually, and I actually, to the end of the show, I was just like, what is she doing it? Is she not doing it? Is this just imagination? Is it happening? Is it illness? But in the end, there's that moment when Nand actually realizes, and I actually really enjoyed that moment. And then when the end, there's another mystery. You know, it's like मेरे को लगा कि यार ये कौन टाइप की है ये. There's a small con to Rasbhari, that and to Shanu. And मेरे मन में मुझे लगा कि ये ना ये एक तरीके से समाज के दोगलेपन को सबक सिखा रही है. वो कहते हैं ना, हमारी माइथोलॉजी में एक कलयुग में कल्कि आएगा जो बिल्कुल इतना सारी बुराई, मतलब पूरी दुनिया बुराई से जब भर जाएगी तो वो आके दुनिया ही खत्म कर देगा. तो आई फील लाइक रसभरी इज ऑन दैट मिशन. शी इज लाइक कि जो झूठ और दोगलापन है हमारे समाज में इस इशू को लेकर, सेक्सुअलिटी को लेकर, जेंडर को लेकर, मर्द औरत को लेकर, इट्स ऑलमोस्ट लाइक शी इज लाइक अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मतलब अदर साइड क्या होता है. यू नो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट कि आपने इतना रिप्रेस किया है औरतों को, अब आप ये रूप देखो. Which is of course, like, obviously in real life nobody wants to do that or be like that, but it's just an interesting story character, right? Like, it's almost, I would
keep remembering that scene from दीवार. मैं अमिताभ बच्चन भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर माँ को नहीं बचाया मैं इतना गंदा आदमी बनूंगा, मैं इतना गंदा आदमी बनूंगा कि आप डर जाओगे कि आपने मुझे बनाया. वो ऐसा कोई एक सीन है ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि रसभरी वो है. She is like, she's that. कि इसके साथ कुछ मतलब I don't know. So yeah, but I think that it's open to interpretation, and I think that's what I like about it. And I think कि जैसे कि बाहुबली 1 में एंड में था ना कि why did कटप्पा kill बाहुबली, तो रसभरी सीजन 1 के भी एंड में है कि लेकिन शानू मैडम ने ऐसा किया क्यों, लेकिन कौन है शानू मैडम, like it's just you resolved one mystery but you've set up another one. Okay, this is Girish, and he's Girish Nagdev. Loved your work in Neel Bhatte Sannata. Looking forward for re-collaborating with Ashwini Iyer. So, looking at your filmography, you've had some really fine performances. Maybe you get talked about more for your Twitter than your work. But how do you look back at your journey? The way the passionate manner in which you are just explaining your role, it's very obvious that you're so invested in what you do. Many times people feel that maybe you're more interested in activism and then other pursuits that you have. Politics, yeah, no. Yeah, absolutely. but tell us. Let's go on a rewind to your filmography. Some really fine performances. How do you look back at your journey? Absolutely. I think that I've always seen, I don't see myself as an activist. I certainly don't see myself as a politician. And I just want to say here again and again that I'm not at the moment at all considering joining politics. I feel that I have more to give as an actor, and I want to continue to do that. I think that as I said, I primarily see myself as a performer, as an actor, and I love being on shoots. And what I love most actually is the prep. I really enjoy the prep of a character. I love it when I get a character that is so challenging. The best state for me is to read a script and be scared and be like, oh my God, मैं ये कैसे कर पाऊंगी? If that has come into my head, if I've thought, oh my God, how will I do this? Then I will do it. I always look back at my filmography and my career, and I think I've had a very wholesome, so far, wholesome 10 years. Now it's been 10 years. I started off with supporting roles. I worked my way up to leading parts. But even the supporting roles were such that they got talked about and people remember those with a lot of affection. I mean, I think the amount of love I got for playing Bindiya it's almost as much as I got for playing Neel Bhatte Sannata and the mother in that. I think that I've had a very fair share of box office hits and blockbusters and super hits and critically acclaimed films like Anarkali and Listen Amaya. I've worked with Shyam Benegal, I've worked with Farooq Sheikh, I've worked with Suraj Barjatia, Anand Rai. These are some of the legends, Salman Khan, and I've worked with new directors like Ashwini and Avinash Das, and I've caught them at their first film. So I've really caught them when they were like just coming into the industry. So yeah, and then I've done OTT now with Rasbari, and it's not that simple. So yeah, I feel quite grateful, honestly, about this journey, and I just feel very confident. And I think yes, there's been 1 year that 2019 just became a year only of controversy and politics and activism, and I think but some of that was things I couldn't control because दुनिया में इतनी चीजें हो रही थी, देश में इतनी चीजें हो रही थी. But I think that I'm really glad that 20 has come back like that. Like I've had a release, so that the actor in me is again at the forefront, hopefully in everyone's minds. I have 2 more releases this year. One is Flesh, which is again a series. Everything on OTT, and it's a great time to be on OTT. Another show with a premiere platform. I have Sheer Khurma, which of course you know about because you launched the poster. So I think that this year is actually it's going to be all Swara, the actor, in the forefront, and the activist is like going to be in the background. Okay, and you recently said on Twitter that you like to work with the likes of Anubhav Sinha and Anurag Kashyap. And Anubhav Sinha, he replied to that as well, that milte hain, jaldi milte hain. Yeah. So anything in the pipeline? And, I don't know. I have to ask Anubhav sir that after I meet him. Unfortunately, lockdown चल रहा है तो वो बॉम्बे में मैं दिल्ली में बैठी हूँ. But otherwise मैं अगले दिन उनके घर पहुँच जाती. But I think that Anubhav sir and Anurag are 2 of the most distinctive voices in Hindi cinema today amongst the makers, and I love their films. Anurag, of course, has been around, has been doing this from the time of Satya.
Anubhav sir, I think, has really just changed mainstream Bollywood in terms of between Mulk, Article 15 and Thappad. He's just like, I don't think anyone thought कि mainstream Bollywood में ऐसी कहानियां बन सकती हैं, and उन्होंने दिखा दिया है करके. So these are really people I admire a lot. I also admire them for the way they balance their own activism and their voice and their work, and obviously a lot of admiration there. So yeah, I hope something comes up soon. But abhi to main I'm trying very hard to write something which I've finished writing, and I'm trying to see how I can piece that together. But ये lockdown कसम से, मतलब ये lockdown writing as in for some web series or movie? No. What exactly? I'm trying to write. Yeah, I'm trying to write a film. Okay. Like a 2-hour feature film. And so once this lockdown finishes, I'll be able to show it around. So you want to direct it as well? नहीं. Okay. इतनी talent नहीं है. So Okay. इतना Okay, भरोसा नहीं है खुद पर. So I have some questions from someone you know. His name is Ajay Brahmatmaj. Oh. He's a film critic. So he has actually multiple questions. Let me take a few. Logical mind फिल्मी किरदारों को निभाते समय डिस्टर्ब करता है क्या? जी, कभी-कभी क्योंकि अक्सर ऐसा लगता है कि आपकी अपनी जो क्रिटिकल फैकल्टी है वो भी दिमाग लगा रही है ना, मतलब दर्शक के सवाल उठाने से पहले हम ही सवाल उठाते हैं. तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये सवाल पूछे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमेशा मैं यही सोचती हूँ कि फिल्म जो माध्यम है वो निर्देशक का माध्यम है. एक्चुअली स्पीकिंग वो अभिनेता अभिनेत्री का माध्यम है नहीं. हम उनकी विजन के लिए काम कर रहे हैं. तो मैं अल्टीमेटली स्पीकिंग मैं थोड़े सवाल पूछती हूँ, मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर मैं जो डायरेक्टर को जो लग रहा है मैं उसके साथ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं उनकी विजन को ट्रस्ट नहीं करूंगी तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगी. I have to be directed by the director. So yeah. Okay, तो अजय जी का एक और सवाल है कि नहीं लगता कि एक्टिविज्म से आपका एक्टिंग करियर बाधित हो रहा है? हाँ, हुआ है. हुआ है थोड़ा, इनफैक्ट काफी हुआ है. पर अब तो मतलब वो वो कहते हैं वो गंगा बह गई, वो निकल गई, तो अब उसको रोक नहीं सकते. एक बार वो शिव जी की जटाओं से निकल के धरती की तरफ बढ़ गई है तो उसको वापस नहीं ले सकते आप. तो मेरे एक्टिविज्म का भी वो हाल है कि वो ट्रेन चल चुकी है अब. तो अब मुझे बेस्ट ये देखना है कि कैसे मैं दोनों चीजों को मैनेज कर पाऊं. और मुझे ये भी लगता है सर कि दुख की बात है कि हम ये समाज बन रहे हैं जहां पे हम लोगों को उनके एक्टिविज्म के लिए पनिश कर रहे हैं. क्योंकि एक्चुअली जब तक कोई इंसान कोई कानून नहीं तोड़ता है, या जब तक वो कोई क्रिमिनल काम नहीं करता है, या जब तक वो कोई गलत काम नहीं करता है, तो हम उसे किस बात की सजा दे रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को अब इस देश के नागरिक होने की सजा दे रहे हैं? क्या हम एक दूसरे को इस देश के कंसर्न्ड नागरिक और कंसर्न्ड सिटीजन होने की सजा दे रहे हैं? तो ये भी सवाल हैं जो कभी कभी मन में आते हैं. बट डेफिनेटली मैं कहूंगी कि हाँ, बाधा हुई है, नुकसान हुआ है, पर अब वो मेरी चॉइस है. मैंने वो पथ अपने लिए चुना था. अब मैं उस पथ पे, जो कहते हैं ना, अब ये थोड़ा ऐसे बोल रही हूँ, बट जो कांटे आएंगे, जो कंकड़ आएंगे, अब आपको उनको सहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. और अजय जी का एक और सवाल मैं लेना चाहूंगा कि समाज की जागरूक समझ के साथ फिल्म इंडस्ट्री के साथ एडजस्ट करने का गुर क्या है? माय गॉड, ये काफी मुश्किल सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है. आई थिंक सर मैंने बहुत स्ट्रगल किया था पहले के कुछ सालों में, और मेरी मम्मी ने मुझे, और मैं बहुत ऐसे, मतलब मुझे हर चीज से मुझे दिक्कत होती थी कि मेकअप करना क्यों जरूरी है, ये स्टाइलिस्ट क्यों मैं लूं, कपड़े पहनना क्यों जरूरी है, हील पहनना क्यों जरूरी है, और हर छोटी इशू पे मेरे को पॉज मिल जाता था. और मेरी मम्मी ने बड़ी अच्छी चीज कही थी मुझे. उन्होंने कहा था कि यार देखो स्वरा, ये जो दुनिया है इसके कुछ नियम है, ये खेल है जिसके नियम है. अब या तो तुम उस खेल को उसके नियम से खेलो, और उसमें जब तुम्हें सफलता मिले तब तुम अपनी बात रखना, और तब तुम उस खेल को कहना कि नहीं ये रूल बदलने चाहिए, या तुम खेल में घुसो ही मत. क्योंकि जब तुम खेल में घुस रही हो तब तो तुम्हें उसी हिसाब से खेलना पड़ेगा जिस हिसाब से बाकी के लोग खेल रहे हैं. और उन्होंने ये भी कहा कि तुम जिस दुनिया में जाना चाहती हो उससे इतनी शिकायतें हैं, तुम्हें कुछ अच्छा भी ढूंढ लो इस दुनिया में. तो मुझे ये लगा कि बहुत सही बात बोली मेरी माँ ने
तो 2 चीजें मैंने करी, एक कि मैं फिर उसी रूल से खेला, चलो हील पहनना है तो हील पहनेंगे, मेकअप करना है मेकअप करेंगे, स्टाइलिस्ट, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट, ये सब मैंने पहले के कुछ साल तो कंगाली में ऐसे गुजरे हैं ना यही सब करने में, क्योंकि मैं सारे सेविंग्स इसी सब में जा रहे थे, तो वो सब किया मैंने। और फिर जब मेरे पास एक अपनी आवाज हुई, आवाज हमेशा थी लेकिन जो लोग सुनने लगे, तब मैं अपनी राय रखने लगी चीजों को लेकर, चाहे वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो फेयरनेस क्रीम्स हैं, चाहे वो फिर एक्टिविज्म है या इश्यूज हैं, जो भी है। दूसरी चीज, जो मेरी माँ ने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सब इंडस्ट्री को बहुत गालियां देते हैं और आजकल तो ज्यादा ही चलन है इस चीज का। मैंने एक चीज बहुत अच्छी पाई है इस इंडस्ट्री के बारे में, और शायद इसलिए मैं इतने सालों से यहाँ टिकी हूँ और यहाँ टिक के रहना चाहती हूँ, कि हमारी इंडस्ट्री लाख बुरी है, लेकिन इसमें ना टैलेंट जो है वो सर चढ़ के बोलता है, वो छुपता नहीं है। नवाज एक सीन में है मुन्ना भाई एमबीबीएस के, जहां पिट रहे हैं वो सीन था। आजा नचले में वो एक भिखारी है जो बीच बीच में आते हैं, 2007 की फिल्म है आजा नचले। और आज आप नवाज को देखिए जहां वो अपने आप में एक कलाकार है जिनका एक मुकाम है। इरफान साहब को देख लीजिए, राजकुमार राव को देख लीजिए, रिचा को देख लीजिए, हुमा, मैं, राधिका आप्टे, मतलब बहुत सारे नाम है, जीशान अयूब, दीपक डोबरियाल, बहुत सारे नाम। सो आई थिंक दैट पंकज त्रिपाठी जी, ऐसे भी मतलब संजय मिश्रा जी, तो मुझे लगता है कि ये हमारी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत बात है। और मैंने ये, मेरी माँ ने मुझे सिखाया ये बैलेंस करना और अपने सारे जो एकेडमिक बैगेज है और उसको अपने फिल्म स्टार एम्बिशन से कैसे बैलेंस करना। All right, so this is Dr. Asif Hassan. I admire performances, especially in Anarkali, Ara Ki Anarkali and Neel Bate Sannata. How will you analyze your upcoming movie Sheer Khorma against the classic movie Fire, that is Shabana Ji once again, based on the issue of freedom of sexual choices and greater issue of women independence? Wow. Yeah, Fire, of course, is a path-breaking film in Hindi cinema. I think and that... I'll also add one more question. There is someone you know, Mr. Faraz Mariam Ansari. He has a question. Why did you decide to do Sheer Khorma? What were the challenges that you faced portraying a queer Canadian Pakistani Muslim woman? How was it working with Shabana Ji, Divya and Faraz? अपना नाम खुद ही डाल दिया. So, सबसे पहले तो जो दर्शक है उन्हें बता दें कि फराज मरियम अंसारी जो हैं वही निर्देशक हैं, शीर खोरमा के राइटर भी हैं, एंड वो अक्सर मुझे ऐसे टेस्ट करते रहते हैं। पर आसिफ जी का सवाल पहला, I think that Fire, of course, is a legendary film. It's a path-breaking film in Hindi cinema, and I think that Fire, and I know that Fire played a big role in Faraz's own growth as a director and as a maker and as a young audience when he watched it. He told me that. Of course, our film is very different in the sense that I think that Faraz has very beautifully told a tale about issues but kept it very personal. So of course there are all these issues of sexuality, of freedom of choice, of independence, of color, because ये of nationality, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तानी लड़की है, ये सब है उसमें। लेकिन जिस तरीके से फराज ने टैकल करी है ना, वो ये सारी चीजें छोड़ के एकदम मुद्दे पे आया है कि माँ है और बेटी है, और ये कहानी है, और दोनों तरफ प्यार है, दोनों तरफ शिकायतें हैं, दोनों तरफ दुख है, दोनों तरफ रंजिशें हैं, लेकिन दोनों तरफ एक चाह भी है कि यार वापस आना है। वो बच्ची भी अपनी माँ के साथ यूनाइट होना चाहती है, माँ बहुत दुखी है जो पूरा सिचुएशन है। एंड आई थिंक सबसे, एंड मुझे इसलिए लग रहा है कि शीर खोरमा उन लोगों के साथ भी रेजोनेट करेगी जो शायद खुद ऑब्वियसली नहीं है गे, जैसे कि मैं स्ट्रेट हूँ, और सिस हेट, ये हमने नए टर्म सीखे हैं। इस फिल्म ने बहुत सिखाया भी है मुझे। नॉन बाइनरी मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, तो ये भी मैंने सीखा इस फिल्म में। आई थिंक दैट वो लोग भी जो अगेंस्ट हैं, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ खड़े रहते हैं, जिन्हें लगता है कि ये नेचुरल नहीं है, और ये सारी जो एक मानसिकता है, आई थिंक कि फराज ने इतनी सुंदरता से कैप्चर किया है ना, कि वो पूरा मुद्दा जो उसने बनाया है कि मोहब्बत गुनाह नहीं है, कि इश्क जैसी चीज, प्रेम जैसी चीज जो अपने आप में इतनी पाक है,
और अपने आप में इतनी पवित्र है, उसमें क्या गुनाह हो सकता है? सो वो बहुत खूबसूरती से उसने 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 सेक्स को मतलब छोड़ परे ही कर दिया है। मतलब उसने सेक्सुअलिटी पे एक कहानी बनाई है जिसमें कोई सेक्स मुद्दा ही नहीं है। उसने पूरा जो है वो इमोशंस पे खेला है. That is the beauty of this series. And of course, Faraz, have told you personally, but will tell you publicly also. Thank you so much, because Divya ma'am and Shabana ji are amongst my favorite actresses. And मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे मौका मिलेगा जल्दी उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का, और वो आपने दिया मुझे मौका. इस फिल्म की मैंने ऑलरेडी कह दिया मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे इसकी यूनिवर्सैलिटी, जिस तरीके से इसने कहानी कही है, वो मुझे मेरे दिल को छू गई, मुझे बहुत खूबसूरत लगा. और फराज का पैशन जो है और फराज के इन्वॉल्वमेंट जो था इसमें, फराज कट ही नहीं बोलते थे कभी कभी, क्योंकि वो खुद ही इतना बह जाते थे सीन में कि उनको कट ही नहीं बोलते थे. और हम सब अपना सीन वीन कर रहे हैं, जो डायलॉग पेज है वो खत्म हो चुका है, अब हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, फराज बैठे हुए हैं, उनकी आंखों में आंसू आंसू आ गए हैं, वो देख रहे हैं, कट ही नहीं हो रहा. सो it was great fun working with him, and I think he's done a really beautiful, brilliant job. I'm very excited for this film. And when is it coming out? So will it be coming out on any OTT platform? What's the plan? Well, I hope so, but I think that हमारा actually premiere होने वाला था लंदन में PFI Blaze में, जो उनका queer film festival है 20th April. जी. And unfortunately because of and एक बॉस्टन में भी प्रीमियर था, तो हमें लगा था कि ये 2 प्रीमियर करने के बाद फिर हम उसको रिलीज करेंगे, लेकिन चूंकि वो प्रीमियर नहीं हो पाए और लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने सोचा कि फिर हम इसको पुश करके एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे उसका प्रीमियर होना चाहिए. So that is actually a call for the producer Maraika and Faraz to take. So I'm not privy to that information, but I'm sure it'll be out very soon. All right, so Swara, I have 2 more questions. Both of them, they're pretty interesting. This is Asif Makandar, and the question is, what's the on and off procedure of getting into and outside of a character? We hear a lot about acting and method acting, but how does the procedure works? You know, once again, from the promo of Sheer Korma, the interesting part is the accent that you're having, the Canadian accent that you're having. You know, maybe people don't give you enough credit for the sort of actor you are because your Twitter takes too much of attention of people. But that accent, it was something that maybe you've never spoken. Yeah. Like even in Rasbari, the last scene, for example, the body language is a total surprise. Because, you know, we've seen you in so many of your avatars, but we've never seen you like that. It's just a small moment. It's like hardly there for maybe 5 minutes, but it is something that completely surprises you. Yeah. I think that's a great question, because I think that is actually the most interesting part for me of being an actor, which is that, so I don't consider myself a method actor. I'm not a trained actor. This is also a disclosure. I've learned acting not in a proper school, or I've not done a course. I'm trained as a dancer, Bharatanatyam dancer, but actually acting I've picked up by doing amateur theater and workshops and so on. But I think that I've devised my own method in which I've brought all my influences. So my first thing always to get into character, 2 things I do. One, I'm a literature student. I did BA literature. I do a textual analysis of the script. I take the script, and if you see my script ever, it's full of notes, post-its. It's like वो text हम लोग जैसे English literature में novel पढ़ते थे, मैं वैसे script पढ़ती हूँ. फिर मैं क्या करती हूँ कि मेरा जो किरदार है उसको मैंने जहाँ पे छोड़ा था लास्ट और जहाँ पे स्टोरी पकड़ रही है उसके बीच में कुछ और सीन गए होंगे, किरदार की लाइफ में क्या हुआ है वो मैं अपना मनगढ़ंत बना लेती हूँ. So that for me there is a unity of that character from the time she is born in the pages to the time that the pages end, because उसकी तो अपनी जिंदगी चल रही है, right? हम तो उसको बीच-बीच में देख रहे हैं. So I have that process. Then as a sociology student, I always I do a sociological analysis. Like this is something we've discussed. Where we are born decides our language and our body language and everything we will be. So like a Bindya will have the body language and the speech of a girl who's never left Banaras. A Shanu will have the English of a woman. She will not have Swara's English, who's born into an English-speaking family and speaks in English to her parents. Shanu will have the English of somebody who's born into a Hindi-speaking family but learned English in school and studied it, but speaks Hindi at home. So that twang we should be able to make out in Shanu. Rasbari obviously has a completely other lehza. Niharika
should actually, in my mind, have the language of somebody who watches American, who is sitting and watching American soaps and American TVs. So I do that kind of an analysis, and then I build that body language, and that's the way to get into the character. I always feel कि सबसे ज़्यादा अगर हम homework कर ले, मतलब मुझे इतना तक पता होना चाहिए कि फेवरेट कलर क्या है और फेवरेट हीरो क्या है शानू का, और रसभरी को कौन से रंग पसंद है या कौन सा फूल पसंद है, फॉर एग्जाम्पल. उस लेवल की मैं अपने मन में बना लेती हूँ, एक डिटेलिंग पेपर पे लिख लेती हूँ, ताकि जब मैं सेट पे जाऊं और हम इम्प्रोवाइज करना शुरू करें, मैं कोई आउट ऑफ कैरेक्टर चीज करूं ही ना. वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, दिस जेस्चर, लाइक दिस रोलिंग योर आईज, this is a gesture that has come to Indian children and young Indian people from American television. This is not, you will not see this in India. Just like shrug. हम लोग ऐसे बात करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ, हम ऐसे समझा के बात करते हैं. तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि किसी भी मोमेंट में ना ये ऐसा कोई बिंदिया करे ही ना, या रसभरी करे ही ना, लेकिन निहारिका कर सकती है, या साक्षी कर सकती है. साक्षी in Veere Di Wedding, I'm constantly rolling my eyes like because Sakshi is in Veere Di Wedding, वो चित्रहार नहीं देख रही है, साक्षी बैठ के Gossip Girl देख रही है. So you know, that kind of thing is fun. And I just want to say one last thing. Sometimes it happens that you kind of get into a character and it really gets into your soul, and that has happened with me twice that I remember very clearly. Once with Ranjana, which actually changed me as a person. I mean, I was never a religious person and I never was ritualistic at all. मतलब मैं मंदिर बिल्कुल नहीं जाती थी. But Ranjana में क्योंकि बिंदिया is, you know, मंदिर जाती है, बहुत श्रद्धा है, आस्था है उसके अंदर. I started going to temples, and of course Banaras is a very spiritual city. And I actually, I mean, I think I had some kind of like, you know, I really discovered some kind of faith. And to date, I don't understand what it is. But like now, every time I go to a temple, I make sure I go inside and I do namaste and all that. And it's just something that started happening to me after Ranjana. And the second was Anarkali. अनारकली करते करते ना मेरे अंदर एक अजब सा गुस्सा और रोष आ गया था. मतलब मैं मेरे अंदर ना ये एक मतलब चंडी रूप टाइप ना मेरे अंदर आ चुका था कि लड़ाइयां कर लो, सेट पे लड़ाइयां, कि कुछ गलत कर रहा है कोई तो, मतलब गलतियां तो लोग करते ही रहते हैं, कि उसमें आके हमने एक मुद्दा बना दिया. और एकदम मुझे 1 साल लगा है समझने के लिए कि भैया ये क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर. एंड नाउ आई अंडरस्टैंड एक्चुअली दैट, you know, actors also, how much work we do to get inside a role, we also should have a process to get out of a role. Wow. That sometimes we don't have. And now I'm working on that. So now I actually have a 1-week process of getting out of a role. Wow. Yeah. That's great. This is Nadeem, and he's having a question that your old video is viral these days where you had asked Karan Johar about launching Star Kids. And you said you are more than a director and a filmmaker. You really are someone who over the years has changed Bollywood. It may not be factual, but just in terms of perception, you are someone who's seen to be a person who launches star children and make these amazing careers. What I want to know is that something that happens consciously, or is that something that kind of just happens in the way, you know, how people, or you known them from bachpan or whatever? Because for the outsiders, for someone like me, it makes Bollywood almost feudal. We'd never know how to find a way in. So I just want to know that, is that a conscious thing, or is it just kind of happens on its own? Karan had given a very long answer. Do you agree with his answer? I think that Karan was actually, do you still agree with his answer? No, I think that Karan was actually very honest, because he confessed to the fact that yes, they end up taking people who are around them, and the people around them are often star children. Actually, by the end of the answer, he does say that, yeah, maybe that's what happens. At one point, he also said that Karan Malhotra took Siddharth Malhotra as an AD because Malhotra, same surname. So I think that इससे ज़्यादा honest admission हो नहीं सकता कि किस तरीके से अक्सर काम होता है. लेकिन मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी that you know, let's understand that this kind of power play and these kind of relationship based employment happens in every industry. It happens everywhere. Faridun, of course you didn't choose to follow the path of your father, but if you had, you would have had an advantage that maybe somebody जिसके पिताजी रिक्शे वाले हैं उनको नहीं होता, जो कि
पोएट बनना चाहते हैं, उनको नहीं होता। आपके पास एक कल्चरल कैपिटल है अपने पिताजी के काम का, सोशल कैपिटल है, मेरे पास है। अगर मैं एकेडमिक्स में जाना चाहती तो मुझे भारत के टॉप एकेडमिक्स और internationally top academics reference letters de deti. I have no doubt that I would have gotten admission in an Ivy League university in the US as an academic. So the thing is that that power structure exists everywhere. It's not just Bollywood. So I think that let's not act like only Bollywood mein ye hota hai. Of course, it's a sign of privilege. It's a sign of access. It's a sign of power. And we should discuss it. We should debate it. And I think that Karan said it, and he's absolutely right. And I think इन जो साल बीते हैं 2016 की वो बात और अब 20 में, I think things have opened up a lot more because the OTT platform has just come in a way, and it has just given us new faces. It has given us new content. I mean, look at Jaideep. Jaideep Ahlawat is such a fine actor. I mean, I remember his performance in Gangs of Wasepur, and finally he has had a show that does credit to his talent. Of course, it's taken time. I think the biggest thing that happens in Bollywood for outsiders and insiders is कि जिस चीज के लिए सोनम, आलिया, सोनाक्षी को 1 या 2 साल लगेंगे, जिस मकाम पे पहुंचने के लिए स्वरा भास्कर, ऋचा चड्ढा, हुमा कुरैशी को 10 साल लग जाएंगे, या 8 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे. And I think that is the big thing. You know, they have a lead in the race, which is a very long lead that we don't have. But again, as I said, that इसमें ऑडियंस का भी रोल है यार. आपको अगर हमसे हमदर्दी है, आउटसाइडर से हमदर्दी है, please watch our films in theaters, and please watch our shows, and please comment, and please tag the directors who you think should work with us. So I've interviewed Manoj Bajpayee and Jimmy Shergill, for example, in the recent times. Both of them just said interesting thing. So Manoj Bajpayee said that nepotism exists everywhere, but what he said was that जो failure का success बनाया जाता है वो सही नहीं है. That's not right. And Jimmy Shergill told me that जो इस तरीके से मजाक बनाया जाता है, maybe I think that's not really cool. Do you feel that maybe slight uppishness and that's not cool? Absolutely. But you know, that is again not a function of it's not just a function of the industry. I think people miss a very important thing. There is a class bias and an elitism bias and a linguistic bias everywhere. There is a sense where, you know, the South Bombay types, ये मीडिया में भी होता होगा, है ना, कि जो वर्नैक्युलर भाषाएं बोलने वाले लोग या जो हिंदी भाषी लोग हैं, उनको ये लगता है कि यार जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनके अंदर एक स्नॉबरी है, कुछ लोगों के अंदर कि एक स्नॉबरी है, एंड दे आर नॉट ट्रीटेड एज कूल. यू नो, एक जो हम लोग जब छोटे बच्चे थे तो ये बहुत स्टूपिड सा टर्म था हमारे उसमें कि वो बहनजी है. यू नो, इट्स दैट सेम मेंटालिटी कि ओ ये तो बहनजी, और एक हम बड़ा गंदा वर्ड था, बहनजी टर्न मॉड, BTM. So we used to call it BTM. So, you know, it's that snobbery is not just in the film industry. That snobbery is a product of the class system in our country. And it's a product of the fact that English plays such a strong role in that class system. Because when the British were here, there was a certain class, which was really the upper caste, Brahmins, the Kshatriyas, and that class that quickly took that education and quickly became very westernized, and amongst the other religions, the higher castes and the higher classes that became very urban, westernized, and English speaking, and the large majority of the country didn't have access to that education. And so that class system is actually very deeply linked to, and that elitism is very deeply linked to our colonial experience. It's linked to our class system. It's linked in sometimes in India, caste and class are both linked. It's linked to that. And I think that people miss that. So it's not just, you know, I think that if you ask industry people, कि जो old timers हैं, जो हिंदी भाषी families हैं, वो बोलेंगे कि यार ये जो English speaking families हैं, वो हमसे, you know, they're kind of like, they're a little snobbish. So that elitism runs everywhere. It's not just in the film industry. But I will say that you know, that जो मनोज सर ने बात करी कि वो failure को success बनाना, यार उसमें ना मेरा ये मानना है कि studios should also play a role, media should also play a role, corporates should also play a role. क्यों आप as especially today when the studio is so powerful, shouldn't the studio tell a producer or a director that why are you mounting a 20 crore film on an actor who has delivered 3 flops? Why can't the studio say that?
Because No, the no. studios. What he meant was failure को celebrate करना. In the sense कि कोई और अगर किसी जैसे होता है ना कि that Friday पे पिक्चर रिलीज हो रही थी, जिसकी पिक्चर रिलीज हो रही है उससे ज्यादा जो है वो हर किसी को इंटरेस्ट होता है. Okay, sorry. मतलब मैंने स्क्रीनिंग मैंने कल देखी और मैंने सुना है कि पिक्चर जो है मतलब स्ट्रांग नहीं है, वहां चलेगी वहां नहीं चलेगी. So he's basically saying that failure को जो सेलिब्रेट करते हैं जी वो अच्छा नहीं है. That if you're part of the same fraternity, that's not cool because you'll be doing the same thing. Absolutely, but I think that come on, that is, you know, ये ह्यूमन नेचर है. मतलब पेटी होना, तंगदिल होना और थोड़ा सा ऐसे, ये तो ह्यूमन नेचर है ना. ये तो सब जगह होता है. मतलब आई एम श्योर बिजनेस वर्ल्ड में भी जब एक बड़ी बिजनेस हाउस का बड़ा लॉस होता है, उनके स्टॉक गिर जाते हैं, तो दूसरा बिजनेस फैमिली कहता होगा कि अरे उनके स्टॉक गिर गए. मतलब ये तो जो कंपटीशन का एक नेचर है ह्यूमन कंपटीशन का. इट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक that is humanity. But I think that for me the more important questions are कि हम we can all try to be better people individually, but I think कि हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जहां अपॉर्चुनिटी जो है उस पे जो किसी एक या दो या तीन लोगों का कंट्रोल ना हो. I think that is the issue, really. You know what I mean? So I think that is something that it's really a collective effort, you know. Audiences should also be, you know, I mean, it's like saying very simply, I always say कि जो सारे लोग ऐसे कर रहे हो आउटसाइडर, इरफान सर की कारवान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, नवाज की मोतीचूर का लड्डू का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, राजकुमार राव की ट्रैप का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, रिचा की आर्टिकल 375 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, स्वरा भास्कर की अनारकली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ओके, धड़क का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखिए, हीरोपंती का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखिए, स्टूडेंट ऑफ द ईयर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखिए. कौन जा रहा है फिल्में देखने? हम तो नहीं जा रहे, ऑडियंस जा रही है. So let the audience should also be honest. You are interested in how Sridevi's daughter will be. How will she perform? How will she, you know, that the lure of that star system, the attraction of that stardom is a real thing. So let's acknowledge it in us also. And I think that let's be conscious of that. And as I said, you want to support us, please watch our content in theaters.